हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेड आइडियाज। तो आज का मार्केट आपने देखा ये कैसा था। एकदम नीचे होके फिर से ऊपर चला गया एंड इट क्लोज ग्रीन। तो इट वाज एन ऑल राइट मार्केट फॉर अस। वी हैड वन स्टॉक विच हिट द फर्स्ट टारगेट, सो इट वाज अ ओके डे। बाकी तो दोनों तीनों स्टॉक रेंज में ही थे। सो आज के लिए देखते हैं। आज का पहला स्टॉक है टाटा कॉफ़ी। तो चार स्टॉक है, तो उसमें से एक टाटा कॉफ़ी है। इधर आप देख सकते हो रेजिस्टेंस पॉइंट है, और सेम रेजिस्टेंस पॉइंट थोड़ा पीछे जाओगे तो सेम रेजिस्टेंस पॉइंट बहुत टाइम से है। तो इफ इट ब्रेक्स आउट इट्स गोना बी गुड, अदरवाइज इट्स गोना कम डाउन। 15 मिनट्स पर आएगा तो ऐसे एक ये ट्रेंड लाइन है। एंड एज आई सेड, अगर ऊपर ऐसा तोड़ेगा तो रीटेस्ट करके ऊपर, और अगर नीचे जाएगा तो ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे की तरफ। सो डाउन साइड के लिए दिस लुक्स लाइक अ वेरी गुड टारगेट, और ये सेकंड टारगेट right here. And for the upside, hmm, ये अच्छा लग रहा है। एक just one target on the upside. Just change this color to red and red. So that was Tata Coffee. And second stock जो है हमारा Tata Motors है. So 1 hour chart, and as you can see it's support and resistance. पहला रेजिस्टेंस था, फिर ब्रेकआउट, फिर रीटेस्ट, फिर से ऊपर गया, अभी फिर से ब्रेकडाउन, और अभी ये रीटेस्ट हो रहा है। सो 15 मिनट्स पे अगर आप देखोगे तो it's trying to go up, but if it goes down then it has to break this trend line, and then that's for the down move, and this is for the up move. So if you're looking for an upside target, this could be one, and this could be one. And for the downside, this could be one, and this one. And that was Tata Motors. The third one is Polycap. So 1 hour chart, and again the same thing like Tata Motors. वो नीचे से ऊपर ब्रेकआउट करके रीटेस्ट, फिर अप, and अभी फिर से ब्रेक डाउन, एंड इट्स अ रीटेस्ट। सो 15 मिनट्स पे इट्स ट्राइंग टू कम डाउनवर्ड्स अगेन ओवर हियर। तो अभी ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम, और अगर नीचे से ब्रेक डाउन होता है तो ये, और ऊपर से अगर ब्रेकआउट होता है तो रीटेस्ट एंड द अपसाइड अगेन. So the first target would be somewhere around here for upside, and ये आप एक दे सकते हो. And downside के लिए this one looks good, this one looks good. And the last stock for the day is Maruti Suzuki. So 1 hour chart. There is a trend line over here. And अगर आप 15 मिनट्स पे आ जाते हैं तो there is a support and resistance.
and another trend line here. So if it breaks on the upside or on the downside, so upside के लिए ये एक अच्छा टारगेट लग रहा है, और somewhere around here, टारगेट 1 टारगेट 2, और डाउन साइड के लिए ये एक अच्छा लग रहा है, and this one looks very good. So those were the 4 stocks for today. If you like the video, please like, share and comment down. Any questions you have, कोई भी सवाल रहेगा आपको तो नीचे कमेंट करना ज़रूर भूले, तो हम आपको रिप्लाई कर देते हैं. Thank you for watching. Take care and have a good day.